Good morning, dear students. In this video, we are going to discuss the MCQs of Chapter 3, Part 2, the Black Aeroplane. So, let's discuss the MCQs of this chapter for better understanding of this chapter. So, let's move. The first question is, the pilot was flying from dash to dash. सो आप सभी ने चैप्टर पढ़ा है. आई होप दैट यू ऑल नो द आंसर कि पायलट ने जो उड़ान भरी थी वो कहाँ से कहाँ तक के लिए भरी थी. सो व्हाट डू यू थिंक? यस, व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट ऑप्शन? द फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंग्लैंड. इंग्लैंड टू फ्रांस. फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस वो उड़ा था, और फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, और फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, or from France to India. So what do you think is the right option? Yes, so the right option is C. The pilot was flying from France to England. So this is the right option. C is the right answer. So let's move to the next question. Now the next question is, which control station did he contact on his way? कि उसने जब वो रास्ते में था तो कौन से कंट्रोल स्टेशन को उसने कांटेक्ट किया? पेरिस, इंडिया, इंग्लैंड, एंड द डी ऑप्शन इज़ ही डिडंट कॉन्ट्रैक्ट एनी. कि उसने किसी भी स्टेशन को, किसी भी कंट्रोल स्टेशन को कांटेक्ट नहीं किया. सो विच इज़ द राइट ऑप्शन? यस, ए इज़ द राइट ऑप्शन. ही कॉन्टैक्टेड the control station of Paris. So A is the right answer. So let's move to the next question. The next question is, what risk did the pilot take? कि पायलट ने कौन सा रिस्क उठाया, क्या रिस्क लिया उसने? The option is flying back to Paris, कि उसने पेरिस वापस जाने का सोचा, वापस उड़ान भरी पेरिस के लिए. B option is missing the breakfast ही डिज़ायर्ड. उसने जिस ब्रेकफास्ट को खाना चाहता उसको उसने मिस कर दिया. एंड सी ऑप्शन ही टुक नो रिस्क. उसने कोई रिस्क ही नहीं लिया. एंड डी ऑप्शन इज़ फ्लाइंग हीज ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द राइट आंसर आउट ऑफ दीज फोर? कौन सा रिस्क लिया था पायलट ने? व्हाट डू यू थिंक? येस, डी इज़ द राइट आंसर. Flying his old Dakota straight into the storm. So D is the right option. So let's move to the next question. The next question is, the pilot was not able to dash anything. कि पायलट क्या नहीं कर पा रहा था? See, hear, speak, or all of them? Yes, which is the right option? C is the right option. It means A is the right option. The pilot was not able to see anything. उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था because he was into a storm. वो एक तूफान में फंस गया था. So let's move to the next question. Now the fifth question is, why didn't the pilot turn the aeroplane back towards Paris? Yes, कि पायलट ने पेरिस की तरफ जो है एरोप्लेन को क्यों मोड़ा? He wanted to meet his family. He wanted to go on a holiday. He didn't want to miss the breakfast. He didn't like Paris. Yes, which is the right option? He didn't want to miss the breakfast. So C is the right option. So let's move to the next question. The next question is, which of the pilot's instruments stopped working first? So पायलट के कौन से इंस्ट्रूमेंट जो है काम नहीं कर रहे थे? The options are compass, radio, both stopped together, or both were working. So C is the right option. Both stopped together. दोनों ने ही एक साथ काम करना बंद कर दिया था. So C is the right option. So let's move to the next question. The next question is, why was the aeroplane twisting in the air?
कि एरोप्लेन जो है एयर में क्यों ट्विस्ट कर रहा था, क्यों घूम रहा था, क्यों उसे डायरेक्शंस का पता नहीं चल रहा था. एज इट वॉज डार्क नाइट. द फर्स्ट ऑप्शन इज़ क्योंकि रात बहुत अंधेरी थी. बी ऑप्शन इज़ एज इट वॉज अ स्टॉमी नाइट. रात जो है बहुत ही तूफ़ान वाली थी. एंड सी ऑप्शन इज़ ड्यू टू लाइटनिंग, कि बहुत बिजलियाँ कड़कड़ा रही थी. एंड डी ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबव. सो विच इज़ द राइट आंसर? बी इज़ द राइट ऑप्शन. एज इट वॉज अ स्टॉमी नाइट, क्योंकि रात जो है तूफ़ानी थी. देयर वॉज अ ग्रेट स्टॉम. तूफ़ान बहुत बड़ा था. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ they looked like black mountains standing in front of me across the sky. This line is taken from the chapter. राइटर ये बात कहता है कि वे ब्लैक माउंटेन्स की तरह सामने खड़े हुए थे स्काई में. तो क्या थे वो? वट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स. ब्लैक माउंटेन्स की तरह क्या लग रहा था? द ऑप्शंस आर ब्लैक माउंटेन्स, storm clouds and tall buildings. So storm clouds, it means B is the right option. So let's move to the next question.